Spinal cord is also called as myelin. This is spinal cord. In the center of the spinal cord, there is a cavity or ventricle, a cavity similar to the ventricle of the heart. There is a cavity similar to the ventricle of brain. तो आवाज किसकी आ रही है? बाहर क्या चल रहा है? Called as central canal, filled with cerebrospinal fluid. Filled with cerebrospinal fluid. Then spinal cord has inner gray matter and outer white matter. Spinal cord has inner gray matter and outer white matter, which is opposite to the cerebral hemispheres. Which is opposite to the cerebral hemispheres. It is surrounded by 3 meninges. It is surrounded by 3 meninges. This is pia mater, मिडल वाली कौन सी थी बेटा? Arachnoid membrane. This is arachnoid membrane. The space is called as subarachnoid space. The space is called as subarachnoid space. This is ड्यूरा मेटर. सबसे बाहर क्या है? आपके पास अगर अलग पेन हो तो उससे बना लेना. दिस इज ड्यूरा मेटर. दिस स्पेस इज subdural space. ये वर्टिब्रा है. This is vertebra.
ये देखिए, ये वर्टिब्रा के बीच में जो स्पेस है, दिस इज इंटरवर्टिब्रल फोरेमिना एंड द स्पेस बिटवीन, एक चीज और, द स्पेस बिटवीन, लिख लो, द स्पेस बिटवीन वर्टिब्रल कॉलम एंड ड्यूरामेटर, is called as epidural space. Epidural space. It is absent in brain as in brain the dura mater is fused with cranial bones. ये जो है, this is spinal. जो स्पाइनल कॉर्ड है बेटा, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम spinal cord extends from first cervical vertebra, नेक में जो फर्स्ट सर्विकल है वहां से एक्सटेंड हो रही है, फ्रॉम फर्स्ट सर्विकल, पहले सुन लो फिर बना लेना, इसको बनाने में तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा। फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा up to first sacral vertebra, सर्विकल वर्टिब्रा, फिर उसके बाद फिर कौन से आ जाते हैं, चेस्ट में कौन से आ जाते हैं वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, देन लंबर वर्टिब्रा, और फिर लास्ट में सेक्रल वर्टिब्रा। ठीक है, वहां तक है। एंड इट हैज नॉन नर्वस फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइलम टर्मिनेल। दिस इज कॉल्ड एज फाइलम टर्मिनेल। ये जो दिख रहा है आपको, फाइलम टर्मिनेल extends from tip of spinal cord up to the last vertebra. ठीक है, ये लिख लो, write down this first.
यहाँ ठीक करना, ये सेकंड लंबर है। up to the from first cervical vertebra up to second lumbar vertebra. वो क्या है? TERMINALE ये फाइलम टर्मिनेल, NALE टर्मिनेल, ये ठीक कर लेना। अप टू सेकंड लंबर वर्टिब्रा, मतलब इसमें क्या क्या चीजें आ जाती है बेटा? अप टू सेकंड इसमें आ जाएगी 7 सर्विकल वर्टिब्रा प्लस 12 thoracic एंड 2 लंबर। तो टोटल कितने हो गए? 12 और 2 14, 14 और 7 21। तो हम कह सकते हैं कि अवर स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड्स अप टू 21 वर्टिब्रा। वर्टिब्रा कितने हैं आगे हमारे? 26 है। 26 आ जाते हैं ना, 5 सेक्रम फ्यूज्ड है। तो बाकी वर्टिब्रा में क्या है? फाइलम टर्मिनेल। इज इट ओके? लिख लिया ये बना लिया आपने? ये वाला रब कर दूं मैं? कर लो कर लो। तो बेटा पहले ये समझो कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें से 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, ठीक है? तो ये भी लिखना नहीं है पर समझना है ये पहले कि हमारे पास 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। 31 पेयर्स कौन सी है? 7 पेयर्स cervical, 12 pairs thoracic, 5 pairs lumbar, 5 pairs sacral and 2 pairs। देखो जरा आप 5 5 10 11 12 13 14 14 7 पूरी हो गई ना? This coccyx। So these are, इधर बेटा गर्ल्स, इधर बेटा 31 पेयर्स हमारे पास जो है ये स्पाइनल नर्व्स, ठीक है? ये आपने बना लिया पूरा कि नहीं? वॉइस कंजेशन बना लिया बेटा? ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगेन हम ये देख रहे हैं, दिस इज स्पाइनल।
Let us say this is spinal cord. This is, बाकी सब छोड़ो, यहाँ पे this is vertical. These are vertical. ठीक है ना? वर्टिब्रा ये जो है, this is L2. L2 के लेवल पर हमारी स्पाइनल कॉर्ड. उसके बाद नंबर 3, L4, L5 और उसके बाद बाकी. राइट और नॉट? सेक्रल एंड कॉक्सिजियल वर्टिब्रा. जो स्पाइनल नर्व्स है, लेट अस से सर्वाइकल या सर्विकल स्पाइनल नर्व है, ये है C1. तो जो फर्स्ट सर्विकल स्पाइनल नर्व है वो यहाँ से बाहर आएगा, सेकेंड यहाँ से, मतलब दे आर कमिंग थ्रू देयर ओन. इंटरवर्टिब्रल हो रही है, एक होल में से, एक फोरेमिना में से एक ही स्पाइनल नर्व बाहर आता है. डू यू गेट मी? ठीक है. तो अब यहाँ से सेकेंड लंबर स्पाइनल नर्व यहाँ से आ रही है. इसी तरह से they arise very close to each other. And they form a bunch of, इस तरह से एक ग्रुप, एक स्ट्रक्चर ऐसा बनता है. This is called as cauda equina. That is horse tail like. तो ये एक horse tail like structure बनाता है. You get me? ऐसा क्यों? क्योंकि lumbar, sacral and coccygeal spinal nerves, they arise very close to each other. They come down and comes out, या they bends down, comes out through their own aperture, forming a horse tail like structure called as cauda equina. Is it okay? ये समझ में है कॉडा इक्वाइना क्या है? ठीक है. तो अब लिख लो कि there are 31 pairs of spinal nerves. That is 8 pairs of cervical, 12 pairs thoracic, 5 pairs lumbar, 5 sacral and 1 coccygeal spinal nerves. नेक्स्ट पॉइंट करके जशन घर में भी जाके लिखना बेटा, अभी भी करना. अच्छा ठीक है. राइट. सो राइट डाउन. नेक्स्ट पॉइंट है these spinal nerves arise from spinal cord and comes out through their own
intervertebral foramina. Intervertebral foramina. ठीक है. और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. The vertebral column is long whereas spinal cord is short. Vertebral column is long whereas spinal cord is short. Therefore, the spinal nerves in the last region of spinal cord. Spinal nerves in the last region of spinal cord arise very close to each other. Arise very close to each other, comma, bend down, arise very close to each other, comma, bend down and comes out through their own intervertebral foramina. Intervertebral foramina forming horse tail like structure. Forming horse tail like structure called as cauda equina. Called as cauda equina. ठीक है जी. एक ये थोड़ा सा बना लो फटाफट से. कर लिया बेटा. अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे इस तरह से, अगेन अ स्लाइस, एक पतली सी स्लाइस काट के देखेंगे तो दिस इज इस तरह से हमें नजर आएगा. द सेंटर देयर इज सेंट्रल कैनाल. दिस इज H shaped structure. This is gray matter and this is white matter of the spinal cord. ठीक है जी. तो ये जो है this is called as, this is posterior or dorsal side. This one is anterior or ventral side of spine. This is called as, ये जो है this is median sulcus. इसको हम कहते हैं
Gray matter. This is dorsal horn of gray matter. इसको हम कहते हैं ventral horn of gray matter. This is posterior funiculi of white matter. Lateral funiculi of white matter. Anterior funiculi of white matter. This is central. This is the TS of, बना लो फटाफट से. This is the transverse section of spinal cord. Transverse आपको पता चल गया. बेटा ये बनाओ, मैं बस आई रहूँगी. ठीक है बेटा. और ग्रे मैटर में आपको पता है, अगेन जल्दी से बताओ, ग्रे मैटर में क्या होता है? ग्रे मैटर हैज cell bodies of neurons and non-myelinated neurons. Non-myelinated neurons. और यहाँ पे हम थोड़ा सा और करें तो इंटर न्यूरॉन्स है. जबकि वाइट मैटर में इट हैज myelinated nerve fibers of neurons whose cell bodies
are present in gray matter. ग्रे मैटर में जिनकी सेल बॉडीज है, डेंड्राइट्स है, उनके जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? दैट इज प्रेजेंट इन व्हाइट ओके बेटा, ये लेटेस से ये सेल बॉडी है, ये इसकी डेंड्राइट्स है, जो इसका न्यूरॉन नर्व फाइबर है वो यहाँ पे है। वो यहाँ पे माइलिनेटेड शीट यहाँ पे है ना। कैन यू इमेजिन दिस? इस तरह से so this is spinal cord. कर लिया बेटा? लिख लिया? ये रब कर दूं मैं? प्रभजोत हो गया? 1 मिनट कर लो हरमन, आपका हो गया? नाम डालना। ये वाला लिखे वाला रब कर दूं? तो बेटा अब हम थोड़ा सा समराइज करें। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, they receive sensory impulses, then interpret these impulses, modulate them into messages, and send messages. हम modulate them into messages. उसके बाद तो आगे काम आ जाता है न्यूरॉन्स का, मतलब नर्व्स का, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। तो ये रिसीव करती है, इंटरप्रेट करती है और मॉड्यूलेट करती है। दिस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मॉड्यूलेट? मॉड्यूलेट मतलब उसके अकॉर्डिंग मैसेजेस तैयार करते हैं। जो इम्पल्स आई है, सेंसरी इम्पल्स आई है, उसको एनर्जी को कन्वर्ट पहचान कर और उसको मैसेज में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज मॉड्यूलेशन। और उसके बाद आ जाता है बेटा नेक्स्ट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये था सेंट्रल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसका क्या फंक्शन है? कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस। फ्रॉम receptors to CNS and from CNS to effectors.
ठीक है। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, अच्छा यहाँ हम कह सकते हैं 2 टाइप्स मैंने आपको बताए थे, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। सोमैटिक कनेक्ट CNS with voluntary parts of body. ऑटोनॉमिक को हम बेटा विसरल नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। Autonomic nervous system is also called as visceral nervous system. It connects CNS with involuntary visceral parts of our body. Involuntary visceral parts of our body. ऑटोनॉमिक मतलब इंडिपेंडेंट, हमारी इच्छा से जो नहीं चलते। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम हैज cranial nerves and spinal nerves. Cranial nerves 12 pairs, spinal nerves 31 pairs. Cranial nerves connect brain with the voluntary parts of cranium. Cranium is up to neck. इस वाले में जो वॉलंटरी पार्ट्स है वो कंट्रोल कर रहा है क्रेनियल नर्व्स। उसके बाद स्पाइनल नर्व्स कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड with voluntary parts below cranium. That is mainly हम कह सकते हैं limbs and body wall. बॉडी वॉल मतलब हमने ऐसे ऐसे घूम लिए, ऐसे मुड़ लिए, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? दैट इज स्पाइनल नर्व्स। जबकि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इट इज फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है। Each visceral organ has both sympathetic and parasympathetic nerves, and the two
act in antagonistic. Antagonistic means opposite fashion. And the two act in antagonistic fashion. For example, जो हमारा हार्ट है, हार्ट बीट, जो है, सिंपैथेटिक जो है, इट डिक्रीजेस, sympathetic increases rate of heart beat. Sympathetic जो है, हाँ, it increases rate of heartbeat. Parasympathetic decreases rate of heartbeat. Blood pressure. Sympathetic nervous system increases, parasympathetic decreases. Secretions of digestive glands, ये opposite हो जाता है तो sympathetic decreases, parasympathetic increases. Salivary glands. Sympathetic nervous system increases saliva secretion. Parasympathetic decreases saliva secretion. Okay. Then urinary bladder. Urinary bladder, sympathetic relaxes bladder. Whereas it contracts bladder. और जब contraction होगी तो यूरिन बाहर जाएगा. आइरिस या प्यूपिल आई में जो अपर्चर है, सिंपैथेटिक डायलेट्स प्यूपिल, अंधेरे में ये उस पोर को खुला कर देता है. पैरासिम्पैथेटिक कंस्ट्रिक्ट्स प्यूपिल. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लेना. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, sympathetic nervous system is also called as thoracolumbar outflow. Thoracolumbar outflow. As it has branches of thoracic and lumbar spinal nerves. Thoracic and lumbar spinal nerves.
ये स्पाइनल नर्व्स मैंने बताई थी ना, सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल, कॉक्सीजियल, उनकी ब्रांचेस है ये, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। इट इज कॉल्ड एज craniosacral outflow. Because it has the extensions of 7th, 9th and 10th cranial nerves and few branches of sacral spinal nerves. इसलिए हम मतलब है ये क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स की ही एक्सटेंशंस है, ब्रांचेस है, जो विसरल ऑर्गन्स को सप्लाई करती है। ठीक है बेटा, ये समझ में आई? ठीक है, अब जरा पीछे कॉपी खोल के देखो कि क्या हमने क्रेनियल नर्व्स में तुम्हें बताया था ना, दैट इज 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है, उनके फंक्शंस क्या है, ये बता दिए थे मैंने। ठीक है, सो दिस इज अबाउट हियर। ये वाला जितना स्पाइनल कॉर्ड से आगे वाला है बेटा, ये जो है आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, बट इट कैन बी आस्क्ड इन पीएमटी। आपके स्कूल में तो नहीं पूछेंगे, बट जो एनसीईआरटी है, सॉरी जो पीएमटी है, उसमें ज़रूर पूछ लेंगे। मैं ज़रा देख लूँ कि ट्रांसमिशन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, उसके बाद रिफ्लेक्स सेक्शन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम जो है एक हमने अब हमारा रह गया, दैट इज रिफ्लेक्स सेक्शन, ठीक है, ये पढ़ के आना। एक रिफ्लेक्स सेक्शन है और उसके बाद सेंसरी सिस्टम है, आई एंड ईयर, ये दो रह गए हैं। इस हफ्ते हम ये ख़त्म कर देंगे, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट आपने मुझे बताया था दैट इज़ आपका 3rd यूनिट शुरू होना है, ठीक है, बट 3rd यूनिट में मैं रादर देन सेल और उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं। हम पहले करेंगे सेल डिवीजन, छोटा चैप्टर, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया, खींच बड़ा जल्दी हो जाता है, तो हम सेल डिवीजन पहले करेंगे। फिर आपका बायो का टेस्ट, सुन लो, बायो का टेस्ट जो है, यू विल हैव दिस, मतलब नर्वस सिस्टम, सेंसरी सिस्टम अलोंग विद सेल डिवीजन। जब भी 8th को आपको आई हो कि भी 8th को पड़ेगा शायद, 8th या 11th को है, संडे जो भी है, तो यू विल हैव टेस्ट फ्रॉम दिस न्यूरल कंट्रोल प्लस दूसरा क्या बताया, दैट इज सेल डिवीजन, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू, बाय बाय।